BYJU'S Exam Prep brings to you the first all-India open mock test from 23rd of September to the 2nd of October. Go ahead and register now in the BYJU'S Exam Prep app and compete against thousands of aspirants. Alright, so welcome guys. I hope all of you are doing well. Today we are here to discuss a super duper important topic. You all are aware that recently Shanghai Cooperation Organization Summit was conducted in Uzbekistan. So 15th and 16th of September this was actually conducted in, and the venue as mentioned here is Samarkand, Uzbekistan. Now when we talk about SCO Summit, now these are some important international news affairs which are frequently asked in the exam. Recently, as we all are aware, Iran was the country who became the 9th member to join Shanghai Cooperation Organization. Earlier, it had the observatory status, right? Observation का उनके पास जिम्मेदारी थी कि observatory member है. अब जो है वो full member बन चुके हैं, right? तो ये ध्यान रखिएगा. Before I move forward, guys, quickly let's understand the key highlights of this issue, right? What are the super duper important things that we need to keep in mind? So number one, you can say the newest member of Shanghai Cooperation Organization for sure is important. It is Iran. Secondly, venue, very important. We all know Uzbekistan, Samarkand. And apart from this, the other things are as follows. Prime Minister Narendra Modi joined the leaders for discussions on topical, regional and international issues, right? All of them were discussed. After 2019, the one which happened in Turkmenistan, after that summit, the first time ever, the meeting was not virtual and it was a face-to-face meeting, right? So in presence, this meeting was conducted after 2019. 2019 के बाद पहली बार आमने-सामने बैठ के मीटिंग हुई जहां पे सारे leaders actually talk together about regional peace, security, trade and connectivity, culture as well as tourism. Besides the Indian Prime Minister, Russian President Vladimir Putin, the Chinese Premier Xi Jinping, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, all of them also attended the Shanghai Cooperation Organization Summit, right? The Samarkand Declaration, this is very important, guys. The Samarkand Declaration was signed by the member states. Now, what exactly is this? We'll talk about in the next slide. And this is also very important. India takes over the presidency of the Shanghai Cooperation Organization for 2023. So, very important, guys. India is now also the president of SCO. Do remember for the year 2023. Now, key highlights of the summit include here. Samarkand Declaration advocated what, guys? Commitment to peaceful settlement of differences and disputes between countries through dialogue and consultation. Our Prime Minister also talked about the same when we're discussing about the member countries. We know that Russia is on a full-scale war, almost a full-scale war with Ukraine. Amidst this end of the era of war, this is what the Prime Minister's speech actually sounded like, and he talked about the same, right? All the other countries also resonated the same, right? China also talked about the same, and the Russian president also acknowledged that he understands why there is a concern and why is there a talk about the same. However, it made no such promises of ending the war or anything of that sort. They stress that the principles of mutual respect for sovereignty, independence, territorial integrity of states, equality, mutual benefit, and non-interference in internal matters is very important, and non-use or threat of use of force are the basis of, you can see here, basis which actually destroy relations between countries. So that is not to be, done by any member state. The member countries are planning to develop common principles and approaches to form a unified list of terrorists, separatists, and extremist organizations whose activities are prohibited on the territories of SCO member states. ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया गाइस, बिकॉज चाइना ही तो है सबसे बड़ा. अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितनी बार हम कोई टेररिस्ट को डेजिग्नेट करना चाहते हैं, चाइना हमेशा ब्लॉक करता आया है.
right? Today, if you are reading newspapers, you will be aware that even in recent times, right, China has repeated this. किस व्यक्ति को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होने से बचाया है चाइना ने? ये आंसर आप लोगों को देना है इन द कमेंट्स. लेट्स सी इफ यू नो द आंसर, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, इफ यू आर अटेंडिंग आवर सेशंस. चलिए, ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चाइना इज अ मेंबर ऑफ SCO और हम जानते हैं चाइना कर क्या रहा है. चलिए बढ़ते हैं आगे. Next, you can see here what Prime Minister Modi highlighted in the SCO summit. The Prime Minister highlighted India's economic performance and mentioned that country is is doing actually a very good job. It's growing at 7.5% this year. He also brought attention to startups and unicorns which are being established here in India. तो बहुत अच्छा कल्चर है, इस पोडियम का बहुत फायदा उठाया, हमने अपना प्रचार किया, हमने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है जहाँ पे बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, ब्लॉसम कर रहे हैं. एंड टुडे देयर आर मोर देन 70,000 startups and over 100 unicorns in our country. 100 unicorns मतलब unicorn means a startup or a company whose valuation is more than $1 billion. तो आप देख सकते हो, that's 100 unicorns as said by the Prime Minister, more than that. He also said we want to transform India into a manufacturing hub. अब यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं हम कि भाई टक्कर दे रहे हैं हम चाइना को, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं जैसे चाइना ने बनाया है, और अब हमारी बारी. Raised the issue of transit rights of food supplies between neighboring nations and said that it took many months for India to send supplies टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान. की कितनी गलत बात है. आप देखिए कि अगर कोई कंट्री अगर ब्लॉक कर रही है, SCO के मेंबर ही आपस में ब्लॉक करेंगे, हम हेल्प कैसे करेंगे कंट्रीज को? हाउ विल वी हेल्प आवर नेबर्स? अगर हम लैंडलॉक्ड, आप अगर किसी के साथ लैंड हम बॉर्डर शेयर करते हैं, कोई कंट्री ऐसी है जो लैंडलॉक्ड ही है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा. कितनी सारी SCO कंट्रीज है जो लैंडलॉक्ड है. तो इस वजह से इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो है इंडिया ही नहीं बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी कि ट्रांजिट राइट्स हो और आसानी से एक दूसरी कंट्री से हम पास कर सकें जो भी हमें सप्लाईज भेजनी हो. वो अफगानिस्तान भेजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट जाइब भी मार दिया पाकिस्तान पे. इनिशिएटिव फॉर अ न्यू SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन. रिसेंटली आप सभी को पता है जामनगर में पहला वर्ल्ड, आप सबको पता ही होगा, राइट? अगर नहीं पता तो प्लीज राइट दिस डाउन. पहला हमने दुनिया का सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ये हमने बना दिया है जी जामनगर में. तो WHO ने ये हमें बैक किया है इसको बनाने के लिए, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप इनिशिएटिव, अब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्किंग ग्रुप होना चाहिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर चर्चा करे, बात करे, बिकॉज दे आर वेरी चीप एज वेल. और ये जो साइंस है ये इसका यूज होना चाहिए, राइट? विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली आयुर्वेदा, योगा, Unani, etc. All these things, right? He highlighted that the world is facing the challenges of food security. You can see here food security, and we need to ensure safety of our citizens, right? भूखे ना मरे लोग बाग, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी है. So whatever needs to be done, we should do it right now. Start cultivation and consumption of millets. Millets is something which is grown in most of the countries. In 2023, the UN will observe the year as the International Year of Millets, right? So do remember this. तो इस वजह से ये मौका है कि हम millets की जो आपको पता है बाजरी, ज्वार, एक्सेट्रा, ये सारे जो मिलेट्स हैं, इन सबको हम मिलकर ग्रो करें और इन सबको हम आगे पहुंचाए, वेस्ट में भी पहुंचाए, सो दैट पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग द सेम एज वेल, राइट? तो हमारे यहाँ पे ये सब पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर ने किए जो कि बेहतरीन पॉइंट्स थे. अब यहाँ पे आप देख सकते हो PM's मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो अब ये भी हमारे पास आ गया जी, डेटा देख लीजिए आप. PM Modi met Iran's President Ibrahim Raisi and discussed wide-ranging bilateral ties, reviewed the progress in the development of the Chabahar port as well, and regional developments which include Afghanistan too, right? इसके अलावा he also hold talks with the Uzbekistan president, देख सकते हैं, and discussed ways to deepen connectivity, कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं कंट्री के साथ. Prime Minister also met Russian President Vladimir Putin, और आप देख सकते हो यहाँ पे जब हमने बोला कि हमें काफी दिक्कत हो रही है, इंडिया ने बोला कि भाई वॉर को खत्म कीजिए, तो यहाँ पे पुतिन जी का क्या कहना था आप देख सकते हैं. आई नो अबाउट योर पोजीशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड आल्सो अबाउट योर कंसर्न्स. वी वांट ऑल दिस
to end as soon as possible. We will keep you abreast of what is happening there. हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है वहां पे. हम समझते हैं आपकी जो दिशा है, दशा है, सब समझते हैं हम. ठीक है, दिशा भी और दशा भी सब समझते हैं हम. तो ये बात बोली. Prime Minister also met Turkey's president, you can see Recep Tayyip, and discussed ways to deepen the bilateral ties between the two countries in various sectors. What China and Pakistan said, तो ये आप देख सकते हो. Chinese president called the SCO member states to prevent external forces from destabilizing them by instigating a color revolution, as he asked to maintain strategic independence and build consensus on security cooperation and expand counter-terrorism cooperation. हम सोचिए, देखो ये बात चाइना करता बस शोभा देता है क्या, पर फिर भी कर रहा है. देखो, Chinese president extended support to India for its SCO presidency next year. Also, Pakistan Prime Minister, what did he say? Told the leaders of the Shanghai Cooperation Organization that Pakistan looked like a sea of water after unprecedented floods which hit the country. तो ये काफी दुख भरी बात थी. And called for immediate action to tackle climate change. कि भाई climate change के लिए हमें बिल्कुल कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए. पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो पूरा एकदम पानी में डूब गया था because of the floods. Pakistan Prime Minister also said that the country is victim of terrorism. ये देखो यार, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं विक्टिम ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान. देयर कैन नॉट बी अ बिगर मैनिफेस्टेशन टू फाइट दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म. कलेक्टिवली नीड टू वाइप इट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. चाइना और पाकिस्तान मिलकर बोल रहे हैं कि टेररिज्म को दुनिया से हटा देना चाहिए हमको. सही बात है, बहुत बढ़िया बात कही. वी अग्री. चलिए यहाँ देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिसाइड ईच अदर इन ग्रुप फोटो. यू कैन सी इंडिया के आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर भी हैं यहाँ पे. पहली बार मिले हैं 2019 के बाद सारे लीडर्स से, स्पेशली द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना. तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये कलेक्टिव फोटो ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स मीटिंग for the first time after the standoff in Ladakh, right? जो 2.25 साल पहले जो हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख में, गलवान वैली क्लैश के बाद, उसके बाद से पहली बार आमने सामने मिले हैं. If we talk about Shanghai Cooperation Organization, some important factors which you should note. Earlier it was known as Shanghai 5. It was renamed as Shanghai Cooperation Organization in the year 2001. Number one, it was a permanent intergovernmental international organization. It is, ये पता होना चाहिए आपको, created in the year 2001, came into force in 2003. It is a, you can say it's a counterbalance to NATO of which is backed by US, of course. इसके अलावा official languages are Russian and Chinese. SCO secretariat is in Beijing. Chairmanship is by rotation for a year between each member states. Current members यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं. इसमें एक मेंबर आपको ऐड करना है दोस्तों, और वो मेंबर कौन सा है? ईरान, राइट? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ईरान is set to become a permanent member of the SCO in 2023. इसको नॉड मिल गया है. ईरान has received the nod as well. तो ये भी आप याद रखिएगा, इसमें फिर ईरान भी ऐड हो जाएगा. India and Pakistan became members in 2017. Last in-person summit was there in 2019. Afghanistan, Belarus, Iran and Mongolia are observatory countries. अब यहाँ पे ईरान जो है अब ऑब्जर्वेटरी नहीं रहा, अब क्या हो गया है जी? परमानेंट हो चुका है ईरान. ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा. SCO's partner countries Armenia, Azerbaijan, Cambodia, Nepal, Turkey and Sri Lanka. So do remember this. दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, और अगर आपने अभी तक इस मॉक के लिए एनरोल नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, इमीडिएटली क्विकली रजिस्टर फॉर दिस, बिकॉज दिस इज अ मॉक टेस्ट, इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू सी वेयर वी स्टैंड अमंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. हजारों स्टूडेंट्स के बीच में हमारी क्या पोजीशन है, ये जानने के लिए दिस मॉक इज एब्सोल्युटली अ मस्ट, राइट? सो डू अटेम्प्ट the mock between 23rd of September to 2nd of October, right? This is non-negotiable, right? Guys, that's it from us here at BYJU'S Exam Prep. Before you go, make sure you hit the subscribe button and
keep on watching all the videos that we conduct for you. Also अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो भी क्वेश्चंस हमने पूछे उनके आंसर्स. थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान. थैंक यू सो मच, गुड बाय, सायोनारा.